Greetings everyone, we are Team Tech Fixer and we are back with our PSID 1735. The problem title states on-device semantic segmentation of WMS services with geospatial data export. In this PSID, we have to make a system which will work on both mobile phones and desktop. This system will do semantic segmentation of the images which are being loaded using WMS services. In this PSID, we have to tackle out two main challenges. That is, we have to make the system user friendly so that the non-technical users can also use it. And second, we have to make sure the maximum utilization of on-device GPUs and NPUs. The desired outcome must include three main points. Number one is that we have to make the system OGS compatible WMS services. Number two, we have to export the data in geospatial format using GeoJSON or KML. And number third is that we have to make sure the maximum optimization of on-device GPUs and NPUs. So our approach towards this solution is divided into 5 different aspects. Number 1 focuses on user-friendly interface. Number 2 focuses on adapting segmentation by using real-time GPU NPU acceleration. Number 3 is crowdsourced map update portal where citizen can upload image of any new changes like any new constructions or any new update that has to be put it on map to keep the map current and live. Number 4 is multiple model interaction where we have used voice, text, touch for refinement. Number 5 is geospatial data export by using GeoJSON KML. By now you must be wondering how all these factors are interconnected to each other. So we have built an interactive and a responsive UI user interface on React that also integrates Smart AI Assistant, which is a voice-enabled AI assistant segmentation tool that helps us to identify which layer can be the best fit or also suggests us the best fit for our map. Once the layer selection procedure is done, it is further displayed on map using OGS WMS integration, which is a web map service used by Leaflet.js library. Once the entire segmentation procedure of smart layer is pinned on map, the process of image loading and tiling is proceeded, which is based on user device GPU performance. Further, that image is stored in cache memory for offline support. Our solution is based on adapting model selection and loading, in which our model is trained on the basis of user GPU processing performance, which includes TensorFlow.js for integrating pre-trained symmetric segmentation model with front end. We have also used Web Graphic Library for JavaScript API for rendering high performance 3D, 2D graphic with front end, which is included in hybrid symmetric segmentation, which is a sum up of pre-trained model and a user input. Further, all these procedure is transferred to user input AI interactive refinement, and by using WebGL shader, an AI verification is done, and if the user is not satisfied or want to make any changes in the segmentation of map, then we can use AI interactive refinement tool for the enhancement in the segmentation of the map. But if the user is completely satisfied, then we can directly proceed with the final refinement, that is an advanced version of refinement, which includes feature selection. Once the feature has been selected, the task gets shifted to web worker, which is a background code that mainly focuses on export and computation at background, ensuring that the UI should remain responsive. Further, the GDL.js web assembly is used for reading and writing geospatial data format. Once the entire procedure of the advanced refinement is completed, the geospatial data format is exported with end-to-end encryption for security purpose, and further the data is exported in geojson.kml format. हमारा प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ पे हमारा WMS इंटीग्रेशन के साथ हमारा मैप सेगमेंटेशन चल रहा है। ये हमारा लास्ट हुआ हुआ प्रोजेक्ट है जिसका सेगमेंटेशन चल रहा है। करंटली आप राइट साइड में देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज है, हमारा GPU और हमारा CPU कितना यूज हो रहा है, वो यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाई दे रही है। जो भी हमारे यहाँ चल रहा है बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट, उसके यूजेस के हिसाब से दिख रही है। यहाँ पे AI रिसोर्स लेवल को आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंटेज AI का यूज करना है इन योर सेगमेंटेशन। लाइक आप कुछ सेगमेंटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप यहाँ से ये यूज कर सकते हैं कि आपको 50% AI का यूज करना है, 50% आप अपनी नॉलेज सेगमेंटेशन कर रहे हो। अदरवाइज आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 100% AI का यूज कर रहे हो एंड आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे। ओके, एंड यहाँ से आप अपने रिसेंट प्रोजेक्ट देख सकते हैं। AI सजेस्टेड में आप AI के द्वारा सजेस्टेड गई कोई भी टेरेन या कोई भी लेयर्स यूज कर सकते हैं। एंड ट्रेंडिंग में जो कि ट्रेंडिंग लेयर्स अभी चल रही हैं मार्केट के हिसाब से एंड आपके जो यूजेस पैटर्न है उसके हिसाब से वो ट्रेंडिंग में दिखाएगा। एंड ये हमारा AI असिस्टेंट है जिसके अंदर आप काफ़ी सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको ट्रेंडिंग लेयर सजेस्ट करें तो आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बेस पे ये आपको ट्रेंडिंग लेयर सजेस्ट करेगा। लाइक अभी ऐसे मैं ट्रेंडिंग लेयर सजेस्ट करवा रहा हूँ, तो इसने मुझे सजेस्ट किया टेरेन लेयर सजेस्ट किया इसने मुझे। ओके, एंड सपोज़ अगर मैं इसे ब्रश साइज़ इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो इसने अपना ब्रश साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है। एंड सपोज़ आपको लगता है कि एप्लीकेशन में कोई अपडेट चाहिए या कोई बग्स आ रहे हैं, तो एक बार आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन आपका अपडेटेड है या नहीं है। एप्लीकेशन आपका अपडेटेड है
एंड अब आपका काम हो चुका है एंड आपको अपना डेटा एक्सपोर्ट करना है। आपका डेटा यहाँ पे एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर यहाँ पे आप टेक्स्ट कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, आई वांट टू हैव चैट विद द टीम, ओके, आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून। ओके, तो अब ये आपको टीम रिप्लाई रिवर्ट करेगी, आपकी जो भी ईमेल आईडी एंड ऑल यहीं पे रिवर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक वॉइस फीचर भी है, आई वांट टू हैव चैट विद टेक टीम, सेंड एंड ये हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हमारा एआई अभी वर्क कर रहा है। अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, तो इसके अंदर अभी हम और सारे फीचर्स एक्टिव कर रहे हैं। Now, a very user-friendly interface allows us to set the level of the segmentation. Okay, so with the help of the AI resource level, we can change the level of the segmentation. Currently, the segmentation is set to 10%. On increasing the AI resource level, the quality of the segmentation is increases. High segmentation required much high GPU, so according to the system, we can use the different level of the resource. Current resource is set to 90%. Okay, so let's change it to 10%. Okay, on increasing the level of the resource slowly, we can observe all the changes, and here it is. In the survey map portal, first the user need to write its name, then the description like what changes have taken place in that area, then the image of that changes, and then the phone and email. After submitting these details, the user location and details will be stored on admin portal in a map view, and in the dashboard panel, the admin can even delete the record and submit the email to the user that its form has been submitted. Now coming to what makes a project unique in every aspect. Number 1 is adaptive image loading. And this feature, the quality of the image is adjusted based on your device performances, making sure that the image loads smoothly on your device. Number 2 is that we have an interactive voice response. In this, there is an AI chatbot which makes it user friendly, and for the user, the things get easier. Number 3 is that we have a multimodal interaction in which the user can interact through speech, touching the screen, or through text. So the future scope of our project is develop a comprehensive API. So we have created an API that allows the third-party developer to implement this semantic segmentation functionality into their own application. Second one is implement the argument reality implementation to develop an AI component that overlays the semantic segmentation result onto a real-world imaginary view through a mobile device camera. And last one is real-time collaborative segmentation, which enables the multi-users to work on the same map or the image on the same time, and where the changes made by the one user are instantly reflect for the others.